Good day. I am Dr.K Gireesh, physician, neurophysician and neurosurgeon. This is the RNA series, number 80, Random Questions in Neurology and Neurosurgery, with answers by Dr. Gireesh. This is to benefit the practitioners of neuroscience and the medical field for a lifelong learning and also for public awareness. In this series, the important question which I am addressing is, what are the functions of the lobes of the brain? This question is a very important question, and I intend to answer this question is to commemorate the World Brain Day, which falls on the 22nd July. And in that, one of the important component is educating the public about the functioning of the lobes of the brain. So I consider this question as a very important question to address. अपने दिमाग को जाने और दिमाग को बेहतर कैसे बनाए? Having scanned and worked with more than 35,000 brains, it is dear to me that brain is involved in everything we do and everything we are. 35,000 से ज्यादा दिमागों को स्कैन करने और उनके साथ काम करने के बाद मुझे यह बात बहुत अच्छी तरह समझ में आई है कि हम जो कुछ भी करते हैं और जो कुछ भी हम हैं उसमें दिमाग शामिल होता है. When your brain works normally, you are normal. When your brain has trouble, you have trouble in your life. जब आपका दिमाग नॉर्मल काम करता है तो आप नॉर्मल होते हैं. जब आपके दिमाग में कोई दिक्कत होती है तो आपकी जिंदगी में भी दिक्कत होती है. Brain dysfunction is the number one reason why people fail at school, at work and in relationships. ब्रेन की खराबी लोगों के स्कूल, काम और रिश्तों में फेल होने का सबसे बड़ा कारण है. Brain health is essential to all aspects of the quality of life. Brain health जीवन की क्वालिटी के सभी पहलुओं के लिए जरूरी है. Your brain is involved in everything you do. आपका दिमाग आपके हर काम में शामिल होता है. Getting up in the morning, सुबह उठना, having coffee पीना, brushing teeth, दांत साफ, walking, चलना, playing tennis खेल रहे हैं, traveling on the road in the traffic, यातायात में सड़क पर यात्रा करना, having a bath, स्नान करना, praying, प्रार्थना करना, assisting wife ideas, पत्नी की सहायता के लिए विचार, having breakfast, नाश्ता करना, playing and hearing music, संगीत बजाना और सुनना, reading books and newspapers and watching TV, किताबों और न्यूज़पेपर पढ़ना, टीवी देखना, talking to somebody over the phone, किसी से फोन पर बात करना, talking to yourself, खुद में बात करना, gardening, बागवानी और किनसे करना, नृत्य करना, dancing. Well, your brain is a command and control center that runs your life. आपका दिमाग command और control center है जो आपकी जिंदगी चलाता है. मस्तिष्क का कार्य. Let us see the brain functions. I have operated on the human brain for more than 35 years. The live human brain is as soft as a pudding cream and a gel. मैंने 35 साल तक इंसानी दिमाग को ऑपरेशन किया है. जिंदा इंसानी दिमाग पुडिंग क्रीम और जेल जितना मुलायम होता है. There are different parts of the brain. दिमाग के अलग अलग हिस्से होते हैं. ये हम देखिए, ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है, सुनने और से केंद्र और आंखों केंद्र ऑक्सीपिटल लोब. ये सेरिबेलम है, ब्राउन कलर है, सेरिबेलम है और ये ब्रेन स्टेम है.
आई रिपीट, ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है, ये सुनने केंद्र है। और यहां आंखों केंद्र है, ऑक्सीपिटल लोब, एंड हियर इज द सेरिबेलम and the brain stem. These are all the parts of the brain, the lobe of functions, which I am now just going to enumerate. Frontal lobe, यहाँ है the frontal lobe. Frontal lobe functions, कार्य क्या क्या है? Thinking and planning, सोचना और योजना बनाना, decision making, निर्णय लेना, personality and behavior, व्यक्तित्व और व्यवहार नियंत्रित करना, speaking, बोलने में सहायता करना, वॉलंटरी बॉडी मूवमेंट्स, शरीर की इच्छानुसार गतिविधियां नियंत्रण करना, कॉन्सेंट्रेशन एंड अटेंशन, ध्यान और एकाग्रता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं का समाधान, इमोशनल कंट्रोल, भावनाओं के नियंत्रित करना। एंड इफ डैमेज्ड, यदि खराब हो जाएगी, व्हाट हैपेंस? वीकनेस ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, शरीर की विपरीत भाग में कमजोरी, पोर जजमेंट, गलत निर्णय लेना, पर्सनालिटी चेंजेस, व्यवहार में परिवर्तन, एंगर और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, गुस्सा या अनुचित व्यवहार, लैक ऑफ मोटिवेशन, काम करने की इच्छा कम होना, डिफिकल्टी स्पीकिंग, बोलने में कठिनाई, पुअर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, योजना बनाने में कठिनाई, मेमोरी प्रॉब्लम्स, याददाश्त में कमी। नाउ लेट अस सी द पैराइटल लोब, यहां से पैराइटल लोब, पैराइटल लोब बॉडी से क्या फंक्शन है और कार्य क्या क्या है? फीलिंग टच, पेन एंड टेम्परेचर, स्पर्श, दर्द और तापमान महसूस करना, नोइंग द बॉडी पोजीशन, शरीर की स्थिति पहचानना, रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना और लिखना, कैलकुलेशंस, गणना करना, अंडरस्टैंडिंग स्पेस एंड डायरेक्शन, दिशा और स्थान समझना। पैराइटल लोब इफ इट इज डैमेज्ड, यदि खराब हो जाएगी, क्या हैपेंस? लॉस ऑफ सेंसेशन, शरीर में संवेदना कम हो रहा है, कैनॉट आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स बाय टच, छूकर वस्तु पहचानने में कठिनाई, डिफिकल्टी रीडिंग और राइटिंग, पढ़ने लिखने में और से कठिनाई, डिफिकल्टी इन कैलकुलेशंस, गणना करने में कठिनाई, इग्नोर्स वन साइड ऑफ द बॉडी, शरीर के एक भाग की अनदेखी, डिफिकल्टी ड्रेसिंग, कपड़े पहनने में कठिनाई। नाउ लेट अस सी अबाउट द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब, सुनने केंद्र। टेम्पोरल लोब द फंक्शंस, कार्य क्या क्या है? हियरिंग, सुनना, मेमोरी, याददाश्त, अंडरस्टैंडिंग स्पीच, भाषा समझना, लर्निंग, सीखना, इमोशंस, भावनाएं, रिकॉग्नाइजिंग फेसेस, चेहरा पहचानना। एंड इफ डैमेज्ड, यदि खराब हो जाए, मेमोरी लॉस, याददाश्त कम होना, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच, भाषा समझने में कठिनाई, हियरिंग प्रॉब्लम, सुनने में समस्या, सीजर्स, मृगों की दौरा, इमोशनल चेंजेस, भावनात्मक परिवर्तन, कैनॉट रिकॉग्नाइज फैमिलियर फेसेस, परिचित चेहरों को पहचानने में कठिनाई। ऑक्सीपिटल लोब, ये आंखों के केंद्र, ऑक्सीपिटल लोब, ये फंक्शंस और कार्य क्या क्या है? विजन, देखना, कलर रिकॉग्निशन, रंग पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं को पहचानना, रीडिंग विजुअल इंफॉर्मेशन, चित्र और लिखाकर समझना। इफ डैमेज्ड, यदि खराब हो जाए, लॉस ऑफ विजन, दृष्टि कम होना, ब्लाइंडनेस, अंधापन, डिफिकल्ट रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं पहचानने में कठिनाई, विजुअल हालुसिनेशंस, ऐसी चीजें दिखना और वास्तव में नहीं है। लॉस ऑफ वन साइड ऑफ विजन, आंतें दृश्य क्षेत्र का दिखाई न देना। Now cerebellum, now it is this one, cerebellum, cerebellum. ये फंक्शंस, कार्य क्या क्या है? बैलेंस, शरीर का संतुलन, कोऑर्डिनेशन, हाथ पैरों का समस्या, फाइन मूवमेंट्स, सूक्ष्म गतिविधियां, वॉकिंग, चलना, स्पीच कोऑर्डिनेशन, स्पष्ट बोलना। एंड इफ डैमेज्ड, यदि खराब हो जाए, अनस्टडी वॉकिंग, लटखटाकर चलना, ट्रेमर्स, हाथों का कांपना, पुअर कोऑर्डिनेशन, संतुलन बिगड़ना, स्लर्ड स्पीच, आते अस्पष्ट बोलना, एंड डिजीनेस, चक्कर आना, फ्रीक्वेंट फॉल्स, बार बार उठने से गिरना। नाउ द इमोशनल ब्रेन इज इनसाइड द ब्रेन, behind the or inside, deep inside the brain, you get the emotional brain or the limbic system.
ये फंक्शंस कार्य क्या क्या है? वन, कंट्रोल्स इमोशंस, भावनाओं को नियंत्रित करना, हैप्पीनेस खुशी, सैडनेस दुख, फियर डर, एंगर गुस्सा, लव प्रेम, एंजाइटी चिंता। इफ डैमेज्ड, यदि खराब हो जाए, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, भावनाओं में असंतुलन, एंड डिप्रेशन अवसाद, एंड एंजाइटी चिंता, एग्रेसिव बिहेवियर आक्रामक व्यवहार, लैक ऑफ इमोशंस भावनाएं कम होना। And the other function is memory formation, याददाश्त बनाना, helps form new memories, नई बातें याद रखने में सहायता करता है, stores important life experiences, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं याद रखती हैं, helps in learning, सीखने में मदद करता है, and if damaged, यदि खराब हो जाए, memory loss, याददाश्त कम होना, difficulty learning new things, नई बातें सीखने में कठिनाई, forgetting recent events, हाल की घटनाएं भूल जाना। The other function is fear and safety, डर और सुरक्षा, detects danger, खतरे को पहचानता है, helps us escape from harmful situations, शरीर को बचाव के लिए तैयार करता है, and if damaged, यदि खराब हो जाए, poor judgment of the danger, खतरे को पहचानने में कठिनाई, excessive fear, बहुत अधिक डर लगना, reduce fear response, डर का काम महसूस होना, behavior and personality, व्यवहार और व्यक्तित्व is also one of the functions of the emotional brain or the limbic system. Influences the social behavior, सामाजिक व्यवहार नियंत्रित करता, controls emotional responses, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, and if damaged, यदि खराब हो जाए, personality changes, व्यवहार में परिवर्तन, aggressive behavior, गुस्सा, socially inappropriate behavior, अनुचित सामाजिक व्यवहार. And that's about the limbic system. And memory, you have recent memory, याददाश्त, and the remote memory. Recent memory is something what you have taken today morning, yesterday, day for yesterday, and remote memory is something which has taken place a long, long ago. And that is all over the brain. Memory is the brain's ability to receive, store, and recall information. It helps us learn, recognize people, remember experiences, and perform everyday activities. The types of memory. Sensory memory, संवेदी स्मृति, lasts for a few seconds, कुछ सेकंड तक रहती है. Stores information received through senses, vision, hearing, touch. आंख, कान और त्वचा से मिली जानकारी को थोड़े समय के लिए रखती है. Example, seeing a flash of lightning or hearing a horn briefly. उदाहरण, बिजली का चमक या हॉर्न की आवाज कुछ क्षण तक याद रहता. Short-term memory is a working memory. That is, आकालिक स्मृति, lasts for about 15 to 30 seconds, लगभग 15 to 30 seconds तक रहती है. Hold a small amount of information needed immediately. थोड़ी देर के लिए आवश्यक जानकारी को याद रखती है. Example, remembering a phone number long enough to dial it. उदाहरण, फोन नंबर डायल करने तक उसे याद रखना. And long-term memory, दीर्घकालिक स्मृति, stores information for days, years or even a lifetime. जानकारी को से कई वर्षों या पूरे जीवन तक सुरक्षित से रख सकती है. It includes इसके प्रकार एपिसोडिक मेमोरी, व्यक्तिगत स्मृति, memory of personal experiences, जीवन की घटनाओं की याद. Example, remembering your wedding day or your first day at school. उदाहरण, शादी का दिन या स्कूल का पहला दिन. Semantic memory, ज्ञान स्मृति, memory of facts and knowledge, तत्व और सामान्य ज्ञान. Example, knowing that New Delhi is the capital of India. उदाहरण, भारत की राजधानी नई दिल्ली है. And procedural memory, कौशल स्मृति, memory for skills and habits, कौशल और आदतों की स्मृति. Riding a bicycle, swimming or driving a car. उदाहरण, साइकिल चलाना, तैरना या गाड़ी चलाना. So that's about the memory, types of memory. Now we go to the brain stem. This is the small structure here. Very important structure. It is called the control of respiration, BP control, consciousness. All these things are located there. The brain stem is a life support center. ये functions, कार्य क्या क्या है? Breathing, सांस चलाना, heart rate, हृदय की धड़कन नियंत्रित करना, blood pressure,
रक्तचाप नियंत्रित करना, swallowing निगलना, आई मूवमेंट आंखों की गीत, और कॉन्शियसनेस चेतना बनाए रखना, cranial nerve functions चेहरे और गले की नसों का नियंत्रण, एंड इफ डैमेज यदि खराब हो जाए, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग सांस लेने में कठिनाई, डिफिकल्टी इन swallowing निगलने में कठिनाई, कॉमा बेहोशी, डबल विजन दो दो दिखाई देना, फेशियल वीकनेस चेहरे की कमजोरी, स्पीच प्रॉब्लम्स बोलने में कठिनाई, पैरालिसिस लकवा कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग जान का खतरा. So we have 15 breaths per minute and we are heart beating 72 times per minute. And the brain requires only oxygen and glucose. The blood vessels carry that oxygen, glucose और the nutrients को दिमाग तक ले जाती है. Blood vessels carry oxygen, glucose and nutrients to the brain. And that's a beautiful brain. And if you take a small portion of the tissue and examine, you will find a neuron and you find an axon and dendrites. Approximately there are 86 billion neurons in the human brain and form the vast interconnected networks that enable us to sense, move, think, learn, remember, communicate, experience emotions and regulate the vital body functions. मानव मस्तिष्क के लगभग 86 अरब न्यूरॉन विशाल आपसे में जुड़े नेटवर्क बनाते हैं, जिनकी सहायता से हम महसूस करते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, सीखते हैं, याद रखते हैं, संवाद करते हैं, भावनाओं का अनुभव करते हैं और शरीर की आवश्यक क्रियाओं का नियंत्रित करते हैं. All are controlled by the brain. So brain can in fact be studied with MRI and CT scan. MRI और CT scan से brain को देखा और study किया जा सकता है. Well, that is indeed ladies and gentlemen, on the functions of the lobes of the brain, cerebellum and the brain stem, and also I told you about the memory. This is educating the public, especially to commemorate the World Brain Day, which falls on the 22nd of July, and one component of the World Brain Day is to educate the public on the functioning of the human brain. Thank you very much.